हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप खराब स्टॉक में बैठे हैं इन डाउन टाउन में निफ्टी 500 इज गोइंग डाउन, यू आर नॉट हैविंग अ ग्रेट टाइम। मजा नहीं आ रहा होगा अगर आप खराब स्टॉक्स में बैठे हैं। बट इफ यू हैड फॉलोड माय गाइडेंस, दो कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अभी तक आज तक कभी किया नहीं कि you follow anybody and then trade. This is a risky business, not suitable to anyone. But if you had taken guidance from my videos, you are very, very well placed. You know, we are short on the market, Nifty 500, and I'm completely out of stocks. But yes, I'm into stocks, but more in international stocks right now because the US stocks are firing up. Look at our choice, the Tesla, Zoom, PayPal. So those are not recovered. DocuSign. So all are firing up. So, but it's not a great time yet to go into Indian stocks. और वही हम लोग देखने वाले हैं वाया माई फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप के जरिए। सो लेट मी फर्स्ट हाइड, और या तो जिनको सिंस यू आर मे बी कुछ लोग आप जानते नहीं, तो आपके रेफरेंस के लिए लाइन चार्ट रख रहे हैं सो दैट यू कैन रेफर फ्रॉम द एक्चुअल प्राइस लाइन चार्ट। सो कौन सा चार्ट हम लोग देख रहे हैं? वी आर लुकिंग एट द निफ्टी एंड इट्स सिंस दिस लास्ट ब्रेकडाउन, ये मैं 125 के बेसिस पे ड्रॉन। दिस इज डेली चार्ट के हिसाब से फ्रॉम द लास्ट ब्रेकडाउन इट इज गोइंग लोअर। मैंने सजेस्ट किया था कि निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस मेजर लेवल। ये जो मेरे सेटअप में ये फ्लैट लाइन एरिया होता है, दिस फ्लैट लाइन acts as strong support or resistance. So it's quite looking at the candle size, it's pretty bearish. It's not looking कि soon कोई change होने वाला है in the direction. एक बार 125 मिनट 125 मिनट्स का चार्ट को भी देखेंगे। And since the last break point which was here, the market has significantly gone lower. अभी तक कोई भी एग्जिट नहीं आया। ऑल द रीडिंग्स आप जो राइट साइड में देख सकते हैं, लेट मी मेक इट बिगर ताकि आप देख सके लार्ज। I'll change the probability meter का साइज भी चेंज कर लेते हैं टू मेक इट लार्ज ताकि इट्स विजिबल टू यू। सो ये रहे, एक बार ओवरऑल सेक्टर्स का पिक्चर भी देख सकते हैं। विल चूज इंडेक्स एंड ये नीचे आ जाएगा हम लोग का जो इंडेक्स स्ट्रेंथ मीटर, जिसके जरिए क्लियरली दिख जाएगा विच सेक्टर इज शोइंग स्ट्रेंथ और नॉट। बट ओवरऑल पिक्चर अच्छा नहीं है। सेल ट्रेड का देखिए, इस ट्रेड यानी सेल ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी इज अराउंड, क्या मैंने स्विच ऑफ करके रखा है, स्ट्रेंथ टेबल इंडेक्स। ओके, स्ट्रेंथ टेबल स्विच ऑफ मोड में है तो मैंने इसको स्विच ऑन कर लिया। So now it's showing, I don't think strength कुछ खास दिख रहा है। Even S&P Dow is weak in 125 minutes, 125 मिनट चार्ट में। और डेली चार्ट में एक बार देखा जाए so clearly it's clear from the line chart Nifty is bearish and S&P Dow फिर भी strength दिखा रहा है। But 125 मिनट में they are weak means हमारे निफ्टी which is weak will be even weaker और वेरी लाइकली इट इज गोइंग टू ड्रॉप टुवर्ड्स दिस, ये जो पर्टिकुलर लेवल मैंने हाईलाइट किया 23,200, इस एरिया पे ही मेजर बाई ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है। तो यहां पे जाके कंसोलिडेशन होगा, देयर इज लाइकली। बट इफ इट दिस वन ब्रेक्स, आई डोंट थिंक इट विल वेरी इजीली ब्रेक, बट इफ इट डज then we are looking at much bigger decline at least in the current go, मतलब करंट मूवमेंट में वेरी लाइकली आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्टॉप ओवर अराउंड 23,150 200 एरिया पे। सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कि निफ्टी 500। निफ्टी 500 इज अ मच बेटर मेजर होता है स्टॉक का। सो नीचे का टेबल हम लोग देख चुके हैं। विल स्विच ऑफ द टेबल एंड गो टू फाउंटेन ऑफ गोल्ड यानी मदर सेटअप पे जाएंगे। एंड हियर इन निफ्टी 500 जो कि which is a better measure for stocks, it has rather reached हमारे जो टारगेट एरिया था, this area is almost been reached। इसको थोड़ा कलर चेंज करूंगा मैं, आई एम bit particular about colors। so this is
line chart. So this is where it's expected. And if we look at the candle, it has not reached, but it is about to reach. This is the main flat area, which is almost coinciding with Nifty 50 ka area. So another round of a little further decline before the consolidation starts is very likely. What's the positive news? Positive news agar kuch bhi hai bulls ke liye, what I can see is rather the divergence. ये जो निफ्टी बना डाइवर्जेंस देखने के लिए, टू लुक एट बेस्ट, व्हाट वी हैव टू डू इज चेंज फ्रॉम रेगुलर टू डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस जो है वो बेस्ट सीन वाया क्लाउड. तो ये जो क्लाउड है, क्लाउड का देखिए बॉटम जो बना था, बट इस बार जो बॉटम बना है, क्लाउड डिड नॉट मेक अ न्यू बॉटम. So we could be coming another round of fall probably, but we could be coming to the end of current sell-off. But उसके लिए मैं कभी भी jump नहीं करता into trades. It's still very much bearish in 125 minutes chart. There is no reason to jump into stocks right now. Let's move to regular setup rather than divergence. So it's clear कि एकदम it is not a great time to be into Indian stocks as a whole. Obviously देखिए कुछ ना कुछ stocks बढ़ेगा ही. जैसे हम लोग का one good pick about JSW जो हमारे लिस्ट में था has gone beautifully well. This is weekly chart is bearish. Weekly chart तो दिखा रहा है कि first target is coming around 21,100. But could be 20, this area also providing support, but weekly chart is pretty bearish. The still कभी कुछ ना कुछ stocks है जो बढ़ेंगे, जो हम लोग wonderful pick has been this one. Look at the stock go since the beautiful breakdown. So कोई ना कोई stocks तो जरूर बढ़ता है even in the downturn. But overall अगर picture देखा जाए, Marksans after correction going into new breakouts. Beautiful buy signal आया था, उसके बाद we had a ride, but after that now again another ride is looking likely. So कई सारे stocks हमारे इसमें अभी भी ऊपर जा रहा है. अनूप तो wonderful, what a move in अनूप. अभी कोई entry point नहीं है, but it was a beautiful breakout and अनूप has done wonderful. So stocks तो है, पेटीएम मैंने suggest किया था, पेटीएम has been significantly up. Though Paytm is more long term, it is satisfying our IPO strategy. IPO का strategy के हिसाब से Paytm has long way to go. But आप किसी के सुन के ट्रेड मत कीजिएगा, including me. So ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स खराब होंगे, हमको ढूंढना पड़ता है वैसे स्टॉक्स. मैं ढूंढता हूं वाया दिस फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप. तो इसके जरिए ही मैं ढूंढ के निकालता हूं वो स्टॉक्स. But abhi ke liye, generally speaking, my team rather looking at Indian stocks, may or rather look for international stocks. I have now team operating to manage the Indian stocks. So I'm not looking much into Indian stocks, but overall, me and my team, we all know that it's not a great time to be into stocks right now. And overall Nifty dekha jaye, this the small cap which say give a jump. Look at the chart, it's not at all a healthy chart. This is just a dead cat bounce back. This is the level. A further down move seems very quite very possible. ये जो 125 मिनट का चार्ट देखिए, उसमें एक करेक्शन आया, ये रहा अपने ग्रीन सॉक्स के जरिए, विच हैज पार्शियल एग्जिट फ्रॉम द शॉर्ट से, बट फुल एग्जिट तो आया भी नहीं, और बाइंग रिमेन्स फार अवे. So currently it is not, I'll personally not recommend ki jumping into stocks unless you are into good ones. Like we use the fountain of gold setup. आपके पास भी जरूर कोई मेथड होगा. अगर आप मेरे सेटअप यूज कर रहे हैं, then you know कि now is not the time. You are saved. अच्छा दिन गुजर रहा है definitely. You are getting into the right stocks. बट ओवरऑल अगर मार्केट का मैं एनालिसिस करूं तो ये जनरल टाइम नहीं है. मैंने सजेस्ट किया था इट वुड बी गुड टाइम टू स्क्वायर ऑफ म्यूचुअल फंड्स,
SIPs. So overall एक bearish माहौल इंडिया के स्टॉक्स में है. जहां पे स्ट्रेंथ है वहीं पे रहना पड़ेगा. द स्ट्रेंथ इज देयर इन द यूएस. टुडे इट इज डाउन, बट ओवरऑल अगर स्ट्रेंथ देखा जाए तो इट इज द यूएस स्टॉक्स दैट इज स्टिल शोइंग सम स्ट्रेंथ. एंड विद दिस Trump election, it has received further boost. It's going through a correction, but I don't think its run on the upside is over. ट्रम्प का प्रेसिडेंट होने बनने में अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है. इनॉग्रेशन बाकी है. So it can be temporarily a correction हो रहा है. Rather in future, I think awesome move on the upside is likely. So best wishes from my side or to your trading. I hope you get good. Thank you so much for watching my video. अगर पसंद आया, don't forget to put a thumbs up. All the best from my side. And as always,